In today's class, the thing which we will be discussing, that is a poem, Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. But before we start this poem or start discussing it, it's really necessary to discuss the crux or the important points of this poem. Basically, होता यूं है कि अक्सर औकात जब पोएम वगैरह को डिस्कस किया जाता है तो डायरेक्टली उस पर छलांग लगा दी जाती है और लेक्चर के अंदर इंटर हो जाते हैं टीचर या पढ़ाने वाले या बच्चे. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पोएम इन अ वेब टेक्निक. पहले मैं बताऊंगा कि हमने इस पोएम के अंदर डिस्कस क्या करना है और होने क्या वाला है. फिर थोड़ी सी जनरल डिस्कशन के बाद विल डेफिनेटली कम टुवर्ड द टेक्स्ट. फिर हम स्टेंजा वाइज इस पोएम को डिस्कस करेंगे. एंड राइट आफ्टर giving a comprehensive lecture, I will definitely involve you people to come with a prepared presentation for tomorrow. तो जब आप कल आएंगे तो एक presentation को तैयार करके लाएंगे. अच्छा बेटी, when we are going to talk about once upon a time, so it means the poet is going to compare what? Poet is going to compare what? The present and the past. How? When I say the present and the past, I mean to say that the poet is going to discuss, the approaches, the attitude and the behavior of two generations. He is going to discuss the two generations. एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि this poem is going to become an autobiographical poem भी हो सकती है, क्योंकि वो अपना एक तस्करा कर रहा है, अपनी एक बात कर रहा है कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा था. लेकिन एक तरह से ये भी हो सकता है कि he is going to discuss the past and the present. किस तरह से? The old generation and the present generation. When we say the present and the old generation, then we are going to come across two things: the fake and the genuine feelings. The fake and the genuine feelings. Presently, if you observe, people are really rich. They have too much worldly wealth. But whereas the real emotions are concerned, those are not present. So, the present generation is deficient in real emotions, whereas the older generation was concerned, they were full of emotions and genuine emotions. Now let me discuss what really the poet wants to discuss with you people. Actually, we do not know the worth of relations, and we do not know the worth of somebody who is going to knock at your door. It is said that when Allah Rabbul Izzat gets very happy with somebody, so he sends the guest at somebody's door. In the olden time, people were not rich. They were not having beautiful drawing rooms. Their homes were not this beautiful. But whenever they used to receive any guest, they used to have real emotions. They used to get really very happy. They were not, tired.
They never wanted to assume fake smiles for somebody, and they were not feeling it a burden. They used to welcome their guests very warmly. But when you talk about the present generation, what is the reason that the poet wants to go back into the past? Just on the basis of real emotions. When he was a child. So that moment, what he saw, he is going to discuss that. And what was that? As I told you, people were very hospitable. But presently, when you talk about the present generation, if somebody dies, they even don't bother to go to commemorate, to sympathize with that particular person. Now they are totally dependent on WhatsApp, and they are not attending even funerals. What to say? Most of the people, right after the death of somebody, come to know that somebody has passed away in their family, in their vicinity, in their area, in the adjoining area. And after a week, month, few days, they come to know, oh, that person passed away. Why? Because the more we are improving, the more we are declining, the more we are going down, the more we are deflating. What I want to say, I'm using oxymoron, two contradictory qualities. The more we are improving, what does it mean? From worldly point of view, we are touching the peak of sky, we have everything, we have cars, we have bungalows. But from ethical point of view, we are going down. We are not improving. We have everything, but the way and the face and the expressions we have on the arrival of somebody, those are really discouraging. That is why it is said that the face you wear, the smile you have, the facial expressions you have, those are very well understood by somebody. ऐसा नहीं है कि अगर कोई गेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चा भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सकता है. आप इस तरफ आ जाए. I will give you a chance just to laugh right after the lecture. अच्छा, इंग्लिश में कहा जाता है फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड. So somebody who's standing before you, standing at your door, coming to your home, the very first expression and the impression you are going to put on that particular person, he really realizes very easily whether you're happy or not happy. But right now, believe in me, in the present situation, guests are considered burden. We make faces. We don't want to tolerate. We don't want to receive. But what will you say about one thing? Out of all the blessings of Allah Almighty, the best gift one can have is, the true relationships with people. ये जो रिश्ते नाते हैं, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मेरे तोहफों में एक बहुत बड़ा तोहफा है. Try to maintain it. If you maintain it, I will maintain your life. If you are going to destroy it, I will definitely destroy your life. So that's why this poem is going to throw some light on the approaches of the people. What used to happen and what is happening right now. It is not necessary to represent or to serve your guests with very expensive things and fill up your serving sheet with so many edibles, different dishes. ये जरूरी तो नहीं है कि आप अपने दस्तरखान को इतना भर दें कि सामने वाले पे इंप्रेशन कि वाकई मैंने नहीं. बात ये नहीं हो रही. If whatsoever you may serve, खुदा करे वो कोई सब्जी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर खंदा पेशानी और स्माइलिंग फेस के साथ अगर आप कुछ भी रखोगे, और डेफिनेटली दैट विल गिव अ गुड टेस्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज एट योर होम, जो आपके घर में मौजूद है. तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी अप्रोचेस को चेंज करना होगा. वी आर फॉर शॉर्ट टाइम. वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. बाज़ घरों में अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ है. गॉड हैज़ ब्लेस्ड and bestowed some of the families too much. Believe in me, they are always seeking the ways of so many people. They are always ready to welcome somebody, but nobody is ready to come to their home. उनके घर में कोई आना पसंद नहीं करता. On the other hand, there are some families where every second and third day any guest is present. We must feel ourselves very blessed when we have guests at our home. कहते हैं, if you are going to do too much things for your guests, then you will be burdenized. अगर आप अपने मेहमानों को अपनी इस्तात से ज़्यादा चीज़ों के सामने रख कर अगर आप उनके सामने पेश करेंगे ना, तो फिर डेफिनेटली गेस्ट आपको बर्डन लगना लगेगा. इट इज सेड दैट व्हाटएवर इज कुक्ड एट योर होम,
सर्व योर गेस्ट विद दैट, अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के साथ सर्व कर दो मेहमानों को जो आपके दस्तरखान पर मौजूद है या घर में जो पका है. दे विल नेवर बी दे विल नेवर बर्डनाइज यू. सो दिस इज व्हाट इज द थीम ऑफ दैट. मैं टेक्स्ट को लेकर चलूंगा एंड वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रिटन इन दैट. ठीक है. थीम क्या है? कल्चरल क्राइसिस. इस पोएम की थीम क्या है? कल्चरल क्राइसिस. नंबर 2, सेल्फिशनेस या सेल्फलेसनेस भी हम कह सकते हैं. सेल्फिशनेस यही है कि हम सेल्फिश हो जाते हैं तो अपना ही सोचते हैं. थर्ड, लॉस ऑफ इनोसेंस. क्यों राइटर ने कहा आई वांट टू बिकम अ चाइल्ड? जब बच्चा होता है इनोसेंस होता है या इनोसेंट होता है, उसके अंदर इनोसेंस भरी होती है और वो इस किस्म की फीलिंग्स से खाली होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक अबाउट लिटिल किड्स, if somebody is coming at home, so they will be the first who will be ready to receive the guest very happily. ये बहुत खुश होंगे because they are deprived of such feelings of, the fake feelings rather, I must say. Once upon a time, son. Rather, this is rather a discussion between son and a father. So he is accosting, addressing his son. Once upon a time, son, they used to love with their hearts. How can a person love with hearts? For example, if emotions are coming from the bottom of your heart, अगर खुशी आपकी दिल के गहराइयों से आ रही हो तो चेहरा भी बता देता है yes you are really happy or you are not happy. तो they used to love with their heart. Why? Their emotions were real. Their happiness was coming from the bottom of their heart and love with their eyes. The sprinkle and the spark and the shine of their eyes used to tell that yes, they used to be very happy with the arrival of their guests. But now they only laugh with their teeth. इसको कहते हैं कि fake smile. Showing teeth and showing real emotions, these are two different things. So people in the olden time, they used to welcome their guests wholeheartedly, very warmly. But presently, people assume that they are really very happy by making a happy face. But this is something, I must say, fake smile. They are disguised. इन्होंने इस स्माइल के पीछे जो असल चेहरा वो छुपा लिया है. What does it mean? It means they are not happy. Their smiles are fake. They want to put that impression that we are not happy. While their eyes block cold eyes. It means their eyes, the eyes with which they are going to put a glance on their guests, these are emotionless. No warmth is there. No impression is there. No, I must say, wholeheartedness is there. These are just deprived of all these. These are hollow smiles. So, search behind my shadow. And what they are going to do that, they are always, definitely, whenever any guest is coming, instead of receiving them happily, first of all, they are curious what they have brought. Is there anything they have brought for us? So now the people are selfish. आज का मेहमान का आना इस तरह से है कि आने से पहले ये कि हम उसे रिसीव करें, हमारी सोच में ये चीज़ मिक्स हो चुकी है कि हम पहले ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए कोई क्या लेकर आया और हमारे लिए क्या तोहफे तहफ आए होंगे. Next stanza. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts. For example, if you are going to shake hand with somebody और फेशियल एक्सप्रेशंस के बगैर आप हाथ मिला के हाथ मिलाने से पहले छुड़ाने की हम कोशिश कर रहे होते हैं. But the people, those who are very happy with your arrival, they will shake hand in such a way that it will put that impression that आप वाकई बहुत खुश हुए, आपके आने से उनको वाकई एक खुशी मिली. लेकिन राइटर यही कहना चाह रहा है कि through their eyes, through their smile, through their facial expression, through their warmth, they put that impression that they used to be very happy with the arrival of somebody. But presently, what is going to happen? But that's gone, son. Now that time is not remaining. अब वो वक्त नहीं रहा. Now they shake hands without hearts. Now they are shaking hand, but their feelings and the emotions are not included in that shaking. But this is one of the ways ना, आपकी खुशी का इजहार करने के लिए एक रास्ता है जिससे आप वार्म दिखाते हो. हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन गर्म जोशी का कोई भी असर नजर नहीं आता. With their left hand search my empty pockets. वही बात हो गई कि अपने जैसी हाथ छोड़ते हैं तो पहले कोशिश होती है कि पुट देयर हैंड्स इन देयर पॉकेट. यानी कहने का मतलब क्या है? इन द ओल्डन टाइम व्हेन द पीपल यूज्ड टू रिसीव देयर गेस्ट, दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड देयर वाज अ वार्म. बट प्रेजेंटली व्हेनेवर समबडी इज गोइंग टू रिसीव सम गेस्ट, सो इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड विद वार्म, दे आर क्वाइट क्यूरियस टू लीव देयर हैंड्स एंड पुट देयर हैंड्स इनटू देयर पॉकेट. बजाय इसके कि वो मिले अपने हाथों को जितनी जल्दी होगा पॉकेट में डालें, ये इंप्रेशन डालने के लिए दैट्स ओके, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ आप आए, बट दिस इज नॉट द रियल फीलिंग. These are
द फेक फीलिंग्स। और आगे कहता है फील एट होम, कम अगेन, दे से एंड व्हेन आई कम। कहता है लगता तो ऐसा ही है कि आज के लोग ये कहते हैं कि अपना ही घर समझिए, बार बार आए, और जब मैं आ जाता हूं अगेन एंड फील एट होम वंस और ट्वाइस, एक या दो दफा जब मैं आ जाऊं, देयर विल बी नो थ्राइस फॉर देन आई फाउंड डोर्स शट ऑन मी। कि वो कुछ तासुरात, इसका ये भी हो सकता है कि इन देयर 2 to 3 days आर द टूर or the visit which they had, they received some feelings, such impressions, such facial expressions. They, through their expressions, they put that impression that we are not happy with you. कहते तो है क्या आप हमें अच्छा लगा है, बार बार आए, लेकिन अगर मैं एक दो दफा आने के बाद जब आता हूं तो ऐसा लगता है कि दरवाजे मुझ पर बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मुलाकात में वो इंप्रेशन डाल चुके होते हैं दैट दे आर नॉट हैप्पी विद माय अराइवल। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ऐसा हो रहा है आज के दौर में। आज हर इंसान यही कह रहा है कि आई शुड बी हैप्पी, मैं खुश रहूं, मेरी जिंदगी बेहतरीन हो, लेकिन आसपास क्या हो रहा है उसको तो छोड़ ही दें, रिलेटिव्स के साथ क्या हो रहा है, इवन वी हैव फॉरगॉटन देम, वी हैव लॉस्ट द इमोशंस फॉर देम टू। उनके लिए भी फीलिंग्स को हम खो चुके हैं। अब कोई किसी के साथ खुशी से नहीं मिलता, अगर मिल भी रहा है तो एक आप ये कहें कि एक रिवायत ही पूरी हो रही है, एक बस टाइम आप खाना पूरी जिसे हम कह सकते हैं वो हो रही है, लेकिन इमोशंस कोई नहीं है। और रिश्ते तो इसलिए अल्लाह पाक ने बनाए दैट यू शेयर योर फीलिंग्स विद समबॉडी। मैं आज भी अगर देहातों में जाऊं तो मैंने काफ़ी काम किया है देहातों में। मैं पिछली क्लासेस में जाते बताता रहा कि राइट नाउ इफ यू गो इनटू द विलेजेस एन ओल्ड पर्सनैलिटी इज सिटिंग एंड besides or around him the people have surrounded him, I mean the youngsters, the new generation, and they are telling the problems। वो उनको मसाइल बताते हैं और वो बुजुर्ग उन मसाइल की रोशनी में हल तलाश करके बताते हैं। They have their discussions, they are sitting together, they are not eating expensive foods, whatever they have they are happy with that, but at least they are meeting, मिल तो रहे हैं। और आगे कहता है so I have learned many things son, अब मैं बहुत सी चीजें सीख चुका हूं। I have learned to wear many faces like dresses, अब मैंने भी सीख लिया है कि आई एम सपोज टू बिकम मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी, कि मैंने भी अपने चेहरे कपड़ों की तरह बदलने शुरू कर दिए। वाई? फॉर एग्जाम्पल होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, हाउस फेस, कॉकटेल फेस, आई मीन शोइंग मिक्स इमोशंस अकॉर्डिंग टू द पीपल वी आर अडॉप्टिंग द फेसेस। कोई अमीर आ जाए तो चेहरे पे बड़ी स्माइल होती है, कोई गरीब आ जाए तो चेहरे पर कोई इंप्रेशन ही नहीं होता है, कोई अपना प्यारा आ जाए चाहने वाला जिससे मतलब हो वी आर क्वाइट हैप्पी, जिससे कोई मतलब ना हो, जिसका कोई काम हमसे पड़ जाए वी आर शोइंग अ वेरी very disgusting emotions to that particular person. So writer is telling his son that I have learned so many things and I have worn many faces, now I am multifaceted। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इस्तेमाल करना आज के लोगों की रूह के अंदर या करेक्टर के अंदर मिक्स हो चुका है। गरीब से मिलेंगे तो उसको ऐसा इंप्रेशन देंगे कि उसको लगेगा शायद मैंने बहुत गलती की, अमीर से मिलेंगे तो ऐसा झुक जाएंगे जैसे कि आप बोलें कि इसके आने के लिए तरस रहे थे। तो जहां अपना काम होते नजर आता है वहां हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, और जहां अपना काम नहीं होता वहां हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो मीटिंग खत्म हो जाए। और आगे क्या कहता है, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल। और फिर हर चेहरे के लिए, हर सिचुएशन के लिए स्माइल भी वैसे ही रखी हुई है, एक्सप्रेशंस भी वैसे ही रखे हुए हैं, जैसे लोग वैसे इंप्रेशंस वैसे एक्सप्रेशंस। हम रियल फेस वाले अब नहीं रहे, हम रियल इमोशंस वाले अब नहीं रहे। आगे कहता है एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद only my teeth। So right now I have learned that do laugh but not with emotions, just with the facial expressions। fake जिसे हम कहते हैं ना teeth service, showing teeth is there but without emotions। मैंने ये सीख लिया है कि मुस्कुरा तो लूंगा लेकिन इमोशंस के बगैर। एंड शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, शेकिंग हैंड्स showing that I'm very happy but emotions are not there। It is said that near doomsday people will be meeting with each other as though they are dying for each other। ऐसे मिलेंगे जैसे एक दूसरे के लिए मर रहे हो, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो, बट रियलिटी इज दैट दे बोथ हैव नो लव फॉर ईच अदर। लेकिन दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इतना जर्रा भी नहीं मिलेगा, ये मुनाफकत होगी। वी हैव अडॉप्टेड अ I must say a hypocritical attitude। We have become hypocrites। मुनाफकत आ गई है हमारे अंदर। फिर कहता है I have also learned to say goodbye when I mean good riddance। कहता है कि अब मैंने ये सीख लिया है, गुड बाय कहने का मतलब होता है शुक्र है जान छूटी। So the movement guest is out of our threshold instead of becoming sad। जैसे पुराने दौरों में लोग गेस्ट जाते थे तो अफसोस के
आसार नजर आते थे कि जाने से दुख हो रहा है। अब जाने से जाहिरी तौर पर तो दुख है, लेकिन गेट का वो कोना क्रॉस नहीं होता, तो शुक्र अदा करते हैं कि चलो भाई, वी गॉट इट, हमारी जान छुट गई। कहता है टू से ग्लैड टू मीट यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, विदाउट बीइंग ग्लैड, एंड टू से इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। यानी when you are not happy, you are saying I'm very glad to see you, very glad to meet you, when you are not happy at all, जब आप खुश होते ही नहीं और आप ये कहते हैं बड़ी खुशी हुई। और आगे कहते हैं कि इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट रियली व्हाट इज दैट, इन रियलिटी यू गॉट वेरी बोर्ड। जब आप बोर होते हैं तो आप इस किस्म के इंप्रेशन डालते हैं। बात वही आ गई कि फेक इमोशंस हर जगह इन्वॉल्व है। और आगे कहता है बट बिलीव मी सन, I want to be what I used to be when I was like you. I was like you क्यों? Because childhood is full of innocence and fake emotions are miles away from the world of innocence or childhood. जब बंदा बच्चा होता है उसके अंदर इस किस्म की झूठी फीलिंग्स नहीं होती, उसके एहसास सच्चे होते हैं, उसके ख्यालात सच्चे होते हैं, उसकी मोहब्बत सच्ची होती है, उसको रियली खुशी होती है। कहता तो मैं उसी दौर में वापस जाना चाहता हूँ जब मैं छोटा था, क्यों? I was very innocent. I want to unlearn all these muting things. I want to forget whatever I have learned from this hypocritical society. इस मुनाफिकत भरी सोसाइटी से जो कुछ मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ मैं दोबारा भूल जाऊँ। कहता है मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लव, और मैं दोबारा क्या सीखना चाहता हूँ कि हंसना कैसे है। फॉर माई लाफ इज लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स। कहता है लेकिन अब मैं शीशे में जब देख कर मुस्कुराता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दांत किसी जहरीले सांप की तरह बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसमें इमोशंस नहीं है। सो दिस इज द रीजन आई वांट टू लाफ बट नॉट विद टीथ, विद इमोशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, जो मेरे दिल की गहराइयों से आ रहे हैं। और आखिर में कहता है सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल once upon a time when I was like you. So writer is going to recall, he wants to go into the world of childhood. One thing you have to keep in your mind, respectable students, the time you are spending, but when you are reaching, when you reach old age, that moment you will be missing your old days. आने वाला ज़माना पता नहीं, शायद इससे भी ज़्यादा मुनाफिकत की तरफ चला जाए, शायद इससे भी ज़्यादा लोग फेड अप हो जाएं। तो जैसे राइटर ने मिस किया, हमारे बड़े मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं, you will definitely be missing, because the more we improve, the more we decline. जितना आगे जा रहे हैं उतना नीचे भी जा रहे हैं, ethically or morally. So if your morals and emotions are dead, so you are not a human being, you are just like a dead soul, walking soul, hollow man. So that's enough for today. कल आप लोग क्या करेंगे कि इसी नज़म की प्रिपरेशन करके आएंगे, और क्या करना है आपने कि लंबी चौड़ी दास्तान नहीं, अपनी एक फीलिंग्स, आपने इस पोएम से क्या बात गेन की, क्या मैसेज आपको मिला, दैट इज व्हाट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। सो कीप ऑन watching videos like that. Inshallah we'll meet with something else in the coming tutorial. Allah Hafiz. Button the button.